ठीक है, देयर आर स्टॉपिंग कंडीशंस, देयर मस्ट बी अ स्टॉप कंडीशन सीरीज. सर आपकी वॉइस अभी भी सपोज ब्रेक वी हो हैव रही है. रिटन दिस, ठीक है ना. ओके, लेट मी चेक. सभी के क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो सर आपकी वॉइस फ्रेंड्स सभी को ब्रेक हो मेरी रही है और वॉइस. आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही सर. ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन. आई डू नॉट नो आज क्या हो रहा है इसमें. अब दिख रही है? नो सर. स्क्रीन नहीं दिख रही है, ये कैसे पॉसिबल है? साफ दिख. सर अब दिख गई. सॉरी, सर इट्स नॉट विजिबल. अब दिख रही है सर. मैं 1 मिनट के, अब जस्ट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ. इंटरनेट कनेक्शन तो जस्ट अ मिनट है. अब मेरी आवाज आ रही है सही? सर एको हो रही है बहुत ज्यादा सर आपकी आवाज. मैं ठीक करता हूँ. अब ठीक है? हाँ सर अब ठीक है. ओके, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो स्लो बोलूंगा. ठीक है, सो मे बी ड्यू टू इंटरनेट इशू. या so I am saying there must be a stopping condition. So suppose I have written this, n is less than t. ठीक है, now okay, what will happen in this case? See, fi is not defined. Fiv underscore r. Oh sorry, spelling mistake. ठीक है, now see, so this is working fine here. ठीक है, we have written this. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यू नीड टू प्रिंट ऑल दी वैल्यूज. ठीक है, तो सपोज आप यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर आई इन रेंज. आपको कहाँ से कॉल कराना है? फ्रॉम सपोज 1 से कॉल कराना है. सो सपोज 1 कॉमा TERM टर्म प्लस 1. ठीक है, एंड यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन. ठीक है, and whenever you are calling this function, you are just returning this value here and you are printing this value. Just see, now what happened here. I'm writing n equals to 1. So see, I is equals to from 1 to term plus 1. So अगर आपको suppose आपको first 3 term चाहिए, if you need first 3 term only, then मैंने क्या लिखा? For I in range 1 comma 3 plus 1. So क्या होगा? It will I will take 1, then I will be 2, then I will be 3. ठीक है, so I will call this. ठीक है, so क्या होगा? First time I am finding the first term. मैं first term find कर रहा हूँ, then I will find the second term, then I will find the third term and so on. और जो value है, the value I am returning in f, और फिर मैं उसको f को यहाँ पे print करा रहा हूँ. ठीक है, so E and D is equals to this one. ठीक है, रन करके सो बट यहाँ पे भी 1 1 1 ही आ रहा है. सो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कराता हूँ. मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं जस्ट आपको टेस्ट बता रहा हूँ कि आप लोग हाउ यू विल परफॉर्म ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, करता हूँ हर बार मैं एक छोटे छोटे स्टेप लिखता हूँ, देन आई विल क्रॉस चेक व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम राइटिंग दिस स्टेप. ना देखिए, अब आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, देन 1 2 आ रहा है, देन 1 3 4 आ. ठीक है, सो अब आप फाइंड देखो, आपका ये आ गया 1 आ गया,
3 आ गया. Now see where is the problem. So I को suppose हम मतलब हमारा सही काम कर रहे हैं. Now see, so every we are having output 1 1 1 1, but हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? 0 1 1. दिस आउटपुट होना चाहिए. ठीक है. So what is the issue here? सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से 1 लिख दिया. इट इज सॉरी. देखिए, सो इट इज गिविंग मी 1 2 3. अब हम यहाँ पे बढ़ाते हैं और 10 कर देते हैं. ठीक है. देन सी, it is giving 1, then it is giving 2, it is giving 3, it is giving 5 8 13. But now where is the problem, friends? In my मैंने क्या किया, आई एम जस्ट सपोज मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए. इफ आई नीड फर्स्ट सीरीज, मैंने एक फॉर लूप लिया फॉर आई इन रेंज 1 टर्म प्लस, एंड आई एम कॉलिंग Fibonacci series function. ठीक है. Collecting this value and I am printing this value. So first मैं क्या करूँगा, first I will find the first term, then I will find the second term, then I will find the third term, then I will find the fourth term, then I will find the fifth term, and so on. ठीक है. ऐसा मैं कंटिन्यू करूँगा. ठीक है. जब हम फर्स्ट टाइम फाइंड कर रहे हैं, then n is equals to 1 here and n will be 1 here. ठीक है. So what is the condition for the Fibonacci series? अगर n 1 है तो अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 1 कर दूँ. ओके. सो n इक्वल्स टू 1 पे क्या हो रहा है? इफ n इज 1, व्हाट हैपन हियर? अब देखिए आप. सो यू आर कॉलिंग i इक्वल्स टू 1 हो तो इसको हम इक्वल टू लगा देते हैं यहाँ पे. इक्वल टू. अब देखिए, we are getting this 1, we are getting this 1, we are getting 3, then हम 5 आ रहा है, then 8 आ रहा है, and then 13 आ रहा है. But we are not having this 0 here. अब क्या करना है फ्रेंड्स हमें? Is it clear? This code is clear to all of you? Yes, sir. ठीक है. अब एक वन थिंग इज मिसिंग है. क्या मिसिंग है हमारा? ये वी आर नॉट रिसीविंग दिस 0. ठीक है. वी आर नॉट रिसीविंग दिस 0. तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे हम? इसको कैसे प्रिंट करेंगे? सर हम मैन्युअली प्रिंट नहीं कर सकते? हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर n-1 करें आप. लेट मी चेक. आप देखिए क्या प्रॉब्लम है. सर फिबोनाची सीरीज नेगेटिव नंबर्स की होती है? नहीं, नेगेटिव की नहीं होती है. तो हम कंडीशन ही क्यों लगा रहे हैं नेगेटिव की? हाँ, नेगेटिव नहीं, ये फर्स्ट टर्म हमारा 0 होता है, तो मैं इसका बात कर रहा हूँ. फर्स्ट टर्म इज 0 है. I was just saying that print 0 maybe. क्योंकि और तो हाँ, yes, we can print, yes, we will print 0 and then we will call this from I equals to 2. ठीक है. What we will do here, if we will check if n is less than 1, if n is less than 1, print, sorry, terms. यहाँ पे सर हमने ये चीज why aren't we doing this in the fibrec? उसमें क्यों नहीं कर रहे? sorry, यहाँ पर हाँ, we can do that here also. हाँ, ठीक है, we can do. I mean उधर ज्यादा अच्छा होगा ना, क्योंकि उसमें कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है. If n is less than or n is less than or equal to 1. if पहले तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर आपका n अगर नेगेटिव हुआ तो, so if n is you can write this condition here also, or you can write in the Fibonacci series also. मतलब कि जो इनपुट आप पास कर रहे हैं, दिस इनपुट, सॉरी ये टर्म्स, जैसे ये टर्म्स है, अगर टर्म्स सपोज मैंने नेगेटिव दे दिए, देन व्हाट विल हैपन? ये हमारा रॉन्ग इनपुट है. सो यू कैन चेक दिस आल्सो हियर.
if the term is less than 0 or less than equals to 0. So you can write here message, okay, wrong input, ठीक है, wrong input. और देन फिर आप क्या कर सकते हैं, ELLC, एल्स में आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा फॉर लूप लिख सकते हैं आप, ठीक है. तो ये कंडीशन तो हमने यहाँ पे चेक कर ली. Suppose by mistake you have entered negative terms, -10, minus terms can't be negative, so you can write one condition here, wrong input terms is less than equals to 0, wrong input, else you are calling this, ठीक है. Now here you can write, Sir, ठीक है, one second. so you Sir, can write one more. if the term is equal to 0, तो wrong input थोड़ी ना हुआ. अगर term equals to आपने डाला ना if term is less than or equal to 0, print wrong input. लेकिन हमारे फिबोनाची सीरीज का पहला टर्म तो 0 ही है. नहीं, वो फर्स्ट टर्म है ना, Right, I got कह रहा हूँ it. नंबर की बात कर रहा हूँ. 0 terms नहीं हो सकते. हाँ, ठीक है. yeah, I understand. Sorry. हाँ, सब मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो कुछ प्रॉब्लम है. ओके, सॉरी, ओके, स्पेस की प्रॉब्लम है. ठीक है. अब ये रॉन्ग हो गया, 0 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे 10 कर, तो राइट इनपुट हो गया. बट यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है. टू फिगर आउट दिस, ठीक है, आप कैसे फिगर आउट करते हैं इसको, इट डिपेंड्स ऑन यू. सर आई इन रेंज में 0 to term plus 1 डाल देंगे. Can you fill in chat box for safer side? हाँ, will put क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल जस्ट राइट वन कंडीशन हियर, इफ i is equals to 1, if i, अगर मैं यहाँ पे पहले से कर, क्योंकि ऑलरेडी तो हो गई, ठीक है, अगर वो रॉन्ग इनपुट नहीं है तो एटलीस्ट 1 तो हो गई. देन आई विल डू हियर, ओके, प्रिंट, क्या कर दूंगा मैं, आई विल जस्ट प्रिंट 0, ठीक है, कैपिटल 0, ओके, एंड e and d is equals to this, ठीक है. फिर इसके अंदर क्या करूंगा, इसको 2 से कॉल करता हूँ, ठीक है, रिटर्न 1, ओके. अगर फिर n की वैल्यू i के लिए 2, देन वो 2 होगा, देन जो हाँ, यस, फंक्शन है उसमें जो n is less than or equal to 1, अगर कोई उसमें कोई मतलब नेगेटिव टर्म तो नहीं डाल सकता ना. नहीं, अच्छा, ओके, नहीं, उसमें नेगेटिव, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, if n is equals to 2. अब मैं चेक करूँ अब ये काम करेगा कि नहीं, लेट मी चेक. ओके, नाउ इट इज वर्किंग. अब आपने देखा मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट प्रिंटेड फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने प्रिंट करा दिया, दैट इज 0. देन फ्रॉम सेकेंड टर्म ऑनवर्ड I called this Fibonacci function from second term onward, ठीक है. So n will be 2 here, at least n 2 होगा, then n will be 3, then n will be 4, then n will be 5 and so on, ठीक है. जब आपको when n is equals to 2, तो आपको कॉल क्या करना है, n minus 1 this, ठीक है. सर हम रेंज में 0 to term plus 1 डाल सकते हैं ना. नहीं, बस 0 क्यों आएगा, 0 टर्म्स मतलब क्या होगा, एटलीस्ट 1 टर्म तो होगा ना. नहीं, फॉर आई इन रेंज 0 to term plus 1, फिर वो 0 भी रिटर्न कर देगा ना. सी, यहाँ पे जो इसका मतलब होगा, if you are writing here 0, then I will become 0, it will call this 0. फिर आप कह रहे हैं उसको, हाँ, अगर आप ये भी कर सकते हैं टर्म्स 0, बट दैट इज आई थिंक नॉट गुड प्रैक्टिस. आप 0 कर दीजिए यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे कर रहे हैं कि इसको लेस देन इक्वल टू 1 लिख रहे हैं आप. यस सर. हाँ, आई थिंक
तो फिर प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो 0 पे। इसकी जरूरत नहीं है। ओके ओके कर सकते हैं बट थोड़ा वी कैन डू दैट, बट मैं इसको अवॉइड करता हूँ बिकॉज जब कोई थर्ड पर्सन विल रीड दिस कोड तो ही और सी विल अंडरस्टैंड वी आर पासिंग द नंबर ऑफ टर्म्स हेयर, ठीक है। फिर वो समझेगा वो जीरो, व्हाट इज जीरो, जीरो इज नॉट अ नंबर ऑफ टर्म, बट यू कैन, बट दिस वर्क्स फाइन हेयर. But for good programming purpose I try to write from the one that way, because this I stand for the ith term, ठीक है, I stand for me ith term, so zero I am thinking it is zeroth term, but zeroth term there is no zeroth term, ठीक है, so we can do that also, ठीक है. So I am writing all these things in the chat box, ठीक है. ये question clear है ना आपका, ठीक है. If this question is clear to you, then I have one question. Okay, can you compare two number using lambda function? Can you compare two number using lambda function? Yeah. ठीक है. So the question is to find the maximum of two number using lambda function. ठीक है. Just do it. I will give you only 5 minutes, not more than this. ठीक है. In lab I can give you more time, but class में I can't सर give तो more time. So लैम्डा के try. अंदर हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं. हाँ, यस यस यस, यही मेरा टॉपिक था कि जस्ट जैसे लास्ट टाइम हमने किया ना, लास्ट वो टाइम वी डिस्कस्ड लिस्ट लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, याद है आपको? हाँ वही इन एक लाइन में जो पूरा लिख देते हैं स्टेटमेंट, वो वाली चीज ना. हाँ हाँ हाँ, सेम वही चीज आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज आई विल टेल यू, आई विल गिव यू जस्ट अ फ्यू मिनट, नॉट मोर देन दिस. Any one of you have completed? Any one of you have completed?
Yes, sir. Okay, so just tell me what I need to write after this. Am I writing correct? Yes, sir. Okay, after this, After this, colon, and then print A is greater if A greater than B, else print B is greater. print, okay, print A is greater. तो then मुझे ये max नहीं लिखना है यहाँ. I just want to return values here. So if A is greater than B, Yes. after that, Else else B. B. ठीक है. Okay. Can you please share your screen, your name? Mujtaba. Sorry, मोहम्मद मुज्तबा. मोहम्मद. गुड मोहम्मद, आपने सही किया है. आई वांट टू शो यू अदर स्टूडेंट्स आल्सो, वो भी देखें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. ओके, प्लीज शेयर योर स्क्रीन मोहम्मद. हाँ, सी देखिए आप लोग. अच्छा, आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स, ठीक है, मैक्स ए कॉमा बी. ओके, हाँ ठीक है. हम इसको क्या कर सकते हैं, कैन बी कलेक्ट दिस वैल्यू. मैं ये कह रहा था जैसे कि हम फंक्शंस में कलेक्ट करते हैं ना वैल्यू, इन द नॉर्मल फंक्शन बी पास ए कॉमा बी एंड देन वी कैन रिटर्न मैक्सिमम सर वैल्यू. तो प्रिंट के बजाय रिटर्न ए और रिटर्न बी लिख देंगे. रिटर्न नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट आपको ए और बी लिखना होगा. नो नीड टू अच्छा, राइट. ओके सर. ठीक है. ओके, सो यू प्लीज शेयर. आपको सब एवरीवन कैन सी दिस मोहम्मद मुस्तफा से स्क्रीन. आई थिंक ऑल ऑफ यू. Yes, sir. छोटा सा कोड है बस, ठीक है. ओके, सो प्लीज स्टॉप मुस्तफा. ओके, देखिए तो सेम did, but I will show you something extra. Actually, I want to show you something extra. Just writing max underscore 2. I'm just writing here a comma b. ठीक है. Okay, I am calling this and see the out. So the maximum is 20. ठीक है. I'm just asking one thing from you. How much you understand here? My output. Can you see what changes? मैंने लिखा lambda a comma b colon x if a is greater than b and b. And I'm printing max a comma b. What will be my output? सर एक्स अगर Tricky स्ट्रिंग में question है and फिर we तो can ask. सर एक्स अगर स्ट्रिंग में होता तो फिर तो एक्स ही X तो प्रिंट हमने हो कुछ जाता. बताया ही नहीं क्या है. हाँ, तो एरर आना चाहिए तो शायद. Other students, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है. दिस क्वेश्चन. Others, can you please answer? एरर आएगा. देखिए एरर नहीं आएगा. एरर नहीं आएगा. अब anyone can tell me the reason एरर क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि वो See, एल्स वाली स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, इफ पे इफ वाली कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही. हाँ, अब आंसर बताइए. मैं यहाँ पे 30 कर दिया. नाउ अब क्या होगा?
अब क्या होगा फ्रेंड्स? सर आपकी स्क्रीन लैग कर रही है सर। हाँ समझ गया। अब मैंने क्या किया, a की जगह a इज इक्वल टू 30 कर दिया मैंने, एंड b इज इक्वल टू मैंने 20 कर दिया, ठीक है। देन आई हैव रिटन लैम्डा a कॉमा b colon x if a is greater than b else b. Now what will be the output in this case? Any answer friends? Answer please. सर एरर आना चाहिए सर मेरे हिसाब से। अब ऐसा आएगा, now it will be an error, ठीक है। तो देखा मैंने दोनों सेम, आएगा because x is not defined. हाँ x is not defined, but in the हाँ, but इस केस में क्या था, the program is not going toward the x, but इस केस में क्या था कि वो x पे जा रहा है, ठीक है। बट द सेम कोड अगर आप सी लैंग्वेज में लिखेंगे ना, टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर, और कोई अनडिफाइंड वेरिएबल है ना, तो सी लैंग्वेज विल गिव यू एरर, बट पाइथन में एरर नहीं देगा क्योंकि द कोड इज नॉट रीचिंग देयर, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में काफी मतलब ये these are the differences. Now we are discussing two more things is left in the lambda function. First one is the this is clear, I think clear. Now first one is the filter function, ठीक है, filter function. So I'm just writing here filter and just writing question mark, and you can see, yeah. So filter is a function here, and it will take two arguments. First argument is function or none, okay, and the second argument is iteratable. Iteratable just like our list, okay. So function, and what it returns an iterator. It returns an iterator yielding those item of the iteratables of the function for which the function is true. For which the function is true. If the function is none, return the item that are true type, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ इसको। सर वो लाइन कॉम्प्रिहेंशन में एक डाउट था। हाँ बताइए। सर लाइन कॉम्प्रिहेंशन में इफ एल्स ही लगा सकते हैं या वाइल वगैरह भी लगा सकते हैं, या वाइल फॉर लूप लगा सकते हैं लाइन कॉम्प्रिहेंशन में? हाँ लाइन कंपैरिजन में हमने लूप लगाया था, फॉर लूप। आप यू नीड टू चेक एक्चुअली, मतलब in Python there are a lot of things, so we need to check whether this works or not, ठीक है। जैसे कि ये था ना, ये this one I tried, तो मैंने देखा कि whether this is working fine or not. oh, sorry, ओके मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये सॉरी x था, ठीक है। तो we need to check, हम उसको अभी चेक करके देखते हैं, ठीक है, whether while loop works or not. But I think while loops नहीं, while loop will not work, I think. We will check, just a minute, ठीक है। So suppose I am writing this list, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And suppose I give you a question, find out the even numbers in this list. Find out the even numbers from this list. कैसे करेंगे आप? Find out the even numbers from this list. लैम्डा से करना है सर? हाँ लैम्डा से करना है, यस। वैसे तो we can use a for loop up to I equals to 0 to length minus 1, and we can compare whether L of I is even or odd. हाँ सर, फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर भी एक काइंड ऑफ लूप ही है, ठीक है। फिल्टर लगाया मैंने, अगर हम फिल्टर, what are the arguments in the filter? वो फिल्टर में आर्ग्यूमेंट्स वही लैम्डा के जो वो लेता, मैं कह रहा हूँ फिल्टर भी एक काइंड ऑफ वही होता है, लूप ही होता है, क्योंकि वो भी फिर पूरी लिस्ट ही चेक करता है फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक। हाँ x% 2 is equals to 0 and then L
Now what it will give? It will give it is a filter function. अब हमें इसमें क्या करना है? लिस्ट लगाना पड़ेगा आगे. List. Now can you see the output? Now can I use L2 is equals to? ठीक, तो मैंने क्या किया? We have written a filter function. ठीक है? और filter function में there are two arguments. First argument is a function and second argument is a iterables. Iterables मतलब अब next. ठीक है? तो मैंने function में क्या लिखा? Lambda function x colon x is equals to मतलब x is divisible by 2 or not. ठीक है? So I just check it. Yeah, this is fine. Now next is the map function. Map. Okay. Now the same code I am writing here, and here in case of this I am just writing map. Now what will happen? So what is map here? Just a minute. Just a minute. What is map? Okay. So map is again a function. First argument is a function in the map and second argument is again iterative, जैसे कि आपको filter में था, just like filter, but make an iterator that compute the function. So ये क्या करेगा? It will make an iterator. जो भी आपका जो the list में जो भी element होंगे, that will make an iterator that compute the function. तो function it will compute the function. Function में what we are computing? We are computing lambda x colon x percent is equals to 0. So this is a true, or this will give you true or false. This will give you true or false value, friends, or anything else. True or false? Yeah, it will give you true or false. Or map क्या करेगा? Map is not filtering out that value. So map just compute the function. It will just compute the function and nothing else. But filter में क्या था? It will filter out that value according to this. So compute the function using arguments from each of the iteratables. Stop when shortest iteratable is executed. मतलब कि जब सारे iteratable execute हो जाएंगे, then it will stop. So see the difference between both these. ठीक है? देखिए difference. Sometimes in the exam they try to confuse with you. They give you the same thing, and where one time they have written filter, one time they have written a map, and they can ask you what is the output. ठीक है? तो इन इस केस में देखिए आप, this is L here. ठीक है? So first it will check first element. First element is divisible by 2. True or false? First element is divisible by 2. That means this one is divisible by 2. No, sir. It is false. False. तो ये false हो गया. Then it will check second element, और I think last से check करता होगा, doesn't matter. So it will check this. 2 is divisible by 2. Yes, so true. Then it will check 3 is divisible by 2. No, false. 4 is divisible by 2. Yes. So in this case it is not giving true false. It is just filtering out that values. ठीक है? You are just checking. You are just finding those values. Those are divisible by 2. ठीक है? So what is the use of map function in this case? What is the use of map function in this case? Anyone can tell me? Okay, I'm just writing this one. Okay, so instead of this, I am writing this x2. Now I think you can understand the use of this. Is it visible? Map function. We are finding the square of a number. We are finding the square. ठीक है ना friends? Yes or no? And one more function is, हाँ सर ये चीज अगर फिल्टर से करते तो नहीं होता ना? हाँ, अगर आप इसको फिल्टर से करेंगे तो देखिए क्या प्रॉब्लम है. देखिए आप, ऑलवेज वी विल ट्राई. ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे वो लिखना है.
x2 सी x में कुछ फिल्टर ही नहीं कर रहा, वी आर नॉट फिल्टरिंग एनीथिंग, ठीक है। सो फिल्टर में से मतलब डजंट चेंज, इट डजंट चेंज एनीथिंग, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस हियर बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। फिल्टर जस्ट अगेन क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। फिल्टर में क्या है, रिटर्न इन इटरेटर yielding those item of iteratives for which function is true, for which function is true, we are not checking true or false, ठीक है। yes or no? so this is the answer here, ठीक है। so filter में क्या होगा, it will return the iterable for which the function is true, so just like हमें even or check करना, or you need to check anything, we will use a filter if we need to compute, जैसे कि square है, x plus 10 है, then we will use a map, ठीक है। yes or no? friends? Yes, sir. so ठीक है। so now one more function is remaining here. I have prepared notes, so I will upload all these things, ठीक है, in the LMS portal. just 5 minutes more I will take, ठीक है। so I have prepared this notes, ठीक है। why use lambda function, this is theoretical, so I'm not discussing this one. ओके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लैम्डा फंक्शन का, जस्ट अ मिनट, बहुत देयर इज अ नाइस एग्जाम्पल, आई एम कॉपिंग दिस टू सेव सम टाइम, आई एम कॉपिंग दिस, ठीक है। okay I'm copying this to save some time. This is a best example of lambda function, okay I'm writing a best example of lambda function. देखो सी वी आर यूजिंग लैम्डा फंक्शन विद अनदर फंक्शन, आप देखिए यहाँ पे this is my function, this is my function, ठीक है। and in this function we are using lambda function, in this function we are using lambda function, ठीक। so what is this means, in this my function we are passing an argument n, in this function we are passing an argument n, and we are returning what, a lambda function which will return a into n, or a will we will pass in lambda function, a we will pass in the lambda function, ठीक है। so now आपको दिख रहा है ना this things, yes or no friends? Yes, sir, दिख रहा है। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसको कॉल करता हूँ, so it is giving me, see देखिए I am just written my doubler is equals to my function 2, my function 2. so what does it means, it means my doubler 2, so n is equals to 2, in this case n is equals to 2, and what I am returning, a lambda function a colon a into 2, ठीक है। so my doubler is what, my doubler is now of lambda function, my doubler is what, my doubler is just like a lambda function which will take a as an argument and it will return a into 2, ठीक है। now I am calling this my doubler 11, what does it means, now a will become 11, so it will return 11 into 2 22, ठीक है। now what is the advantage here, see what is the advantage, I am just uncommenting this line. now I am writing the same function again, my function bracket 3, and I am writing my tripler.
That means in this function we are passing n equals to 3. ठीक है, in this function we are passing n equals to 3 and we are returning a lambda function in which the lambda function will take a as an argument and will return a into 3. ठीक है, yes or no friends? ठीक है ना? ठीक है, now I am just writing this my tripler 11. What does it means? जो मेरा lambda function था, now in next time I am passing 11 in my lambda function. So what it will return? 11 into 3. See the output. ठीक है, 22 into 23. अब क्लियर है फ्रेंड्स या नहीं? हेलो, Yes, sir. yes or Clear. no? ठीक है. Yeah. So this is, I think, a good example. If I'm writing here 20, you can see it as 60. ठीक है. So we are using lambda function inside a function. इससे क्या advantage होगा? My function will take an argument and it will return a lambda function. It will return a lambda function. So we are returning lambda function from another function. ठीक है. One more is remaining, but I think you might have a class. 5 minute का topic और है. So do you have class, friends, or we can discuss? Class. Sir, we have a class. Okay, then we will discuss in next yeah, class. last Just 5 minute. Sorry. class is at 10:40, sir. बस I will just take 5 minute. अगर आप लोग Yes, sir. agree करते हैं तो there is a lambda in reduce. Just a minute, I'm sharing. Yeah. 1 minute. Yeah. ठीक है, this one reduce function. Reduce function है. There is a reduce function. ठीक है. And I want to show you this function, this reduce function. बस last topic है. Theoretical you can read. ठीक है. Theory things I will not consider. ठीक है. I'm just copying this function to save your time and will show you the output. This function is available in package function tools. ठीक है. So I'm copying this. Okay, going to my Jupyter notebook. Yes, this is my Jupyter notebook. 1 minute. Yes, Jupyter notebook. ठीक है. I'm just copying this. ठीक है. So there is a function reduce function which is available in function tools. ठीक है. Python package. I'm importing this function. जैसे कि we have imported math package. ठीक है. I'm just writing this instead of filter और जो हमने map use किया है reduce function. So lambda x comma y colon x into y sequences. ठीक है. अब आप देखिए. Now can you please explain what is the purpose of what is this? How 120 आंसर क्यों आया? Okay, now I will tell you the reduce function. Reduce function क्या करेगा? This will take an function and it will take a sequence. ठीक है. Sequence वही आपके जैसे कि list हो गया. ठीक है. Apply a function on 2 arguments. अब read कीजिए. It will apply the function on 2 arguments cumulatively. Cumulatively. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? It will apply that function cumulatively. पहले क्या होगा? This will be 1 into 2. पहले क्या होगा? 1 into 2 आएगा. ठीक है. So 1 into 2 कितना हो गया आपका? 1 into 2 is 2. फिर क्या होगा? 2 into 3 होगा क्योंकि हमारा जो थर्ड टर्म है वो क्या है? 3 है. So it will be 2 into 3 होगा. फिर क्या होगा? 6 into 4 होगा. 24. फिर 24 into 5 होगा. दिख रहा है ना फ्रेंड्स?
यस और नो? ठीक है, तो देखिए आप, अब क्लियर है? क्या करेगा, इट विल टेक टू टर्म्स, ठीक है, और फिर उनको क्यूमुलेटिवली मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले 1 into 2 होगा, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा देन इट विल मल्टीप्लाई 3, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा देन इट विल मल्टीप्लाई 4, देन उसका जो रिजल्ट आएगा देन इट विल मल्टीप्लाई 5। अब क्लियर है? यस और नो? अगर सपोज मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो आंसर बता सकते हैं आप? व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड्स? व्हाट विल बी द आंसर अगर मैंने यहाँ पे 5 कर दिया? ओके, नो प्रॉब्लम, हम बाद में वी कैन डिस्कस लेटर, ठीक है? ओके, क्लियर है? हेलो? Okay. ठीक है, ओके, देन we can discuss the doubts in next class. Anything else, friend? No, sir. Yes, sir. So I want to ask one thing. हाँ, बोलिए। In you in which page number? पेज नंबर कौन सा, मतलब पेज नंबर दैट मींस? In think Python. Page 1. ओ सॉरी, आई नीड टू चेक, मैंने वो थिंक पाइथन से नहीं देखा ये टॉपिक। मैं एक्चुअली वो जो सिलेबस है ना आपका, द सिलेबस, आई एम फॉलोइंग द सिलेबस एक्चुअली। जो सिलेबस में टॉपिक है आपके फंक्शंस, मैंने आपको सिलेबस शेयर किया था फर्स्ट डे। Yeah. मैं फिर से सिलेबस अपलोड कर दूंगा। तो सिलेबस में जो मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 में आपका फंक्शन से स्टार्टिंग है, तो मैंने वो स्टार्ट किया था। Send the syllabus again, sir. सॉरी, मैं Is it on LMS, sir? हाँ, मैंने आपको उसमें क्या कहते हैं, जब टीम्स में जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट डे मैंने आपको सिलेबस दिया था। मैं आई विल अपलोड ऑन LMS आल्सो, ठीक है? LMS में मैं जो फर्स्ट डे का जो रिकॉर्ड मतलब है ना कंटेंट, एंड आई विल अपलोड सिलेबस आल्सो ऑन दैट, ठीक है फ्रेंड्स? हाँ, yes, sir. ओके ओके, ठीक है, तो आई एम जस्ट फॉलोइंग योर सिलेबस। ओके देन, बाय बाय। अरे यार, चंडीगढ़ वाली कॉल कर रही है, उसके पैसे देने, उसके 1200 रुपये देने थे, रह गए थे उसके। मैं कॉलेज में जाता हूँ। कॉलेज में क्या होता है कि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होता है कॉलेज में, और दूसरी चीज कॉलेज में नेट बहुत अच्छा समझ गया, अमीर